Hello everyone. Good morning to each and every one of you. This is Jason with you, and today we are back with our chapter in English Beehive, and this is our lesson number 5, A Legend of the Northland. जैसा कि आप सब लोग ये देख सकते हैं, this is a poem. So let me give the introduction of the poem or what is in it. So basically, this is a ballad poem. Ballad is such a kind of a poem which tells a story. Okay, in short stanzas, and in this poem, all the stanzas comprise of 4 lines, and in this Legend of the Northland, there are a total of 16 stanzas, and these stanzas will tell us a story. Got it. So let's get start from a first stanza. Away, away in the Northland, where the hours of the days are few and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. So basically, this is talking about the region around the North Pole, that is in the Northland. The duration of the day is very less because its position is such that the sun's rays reach for a very less time. When this area is experienced winter season, the duration of the night is very long and the daytime hours are very less. In line 4, they, here there's a word they refers to the people who live in this region. The poet says that the duration of the night time is so long that the people cannot sleep them through. If they go to bed, take a few hours of sleep, and then they wake up, it is still the night time. The author or he wants to empathize on the fact that the duration of the night is very long. So this is the first stanza which says about a period. In the stanza 2, where they harness a swift reindeer to the sledges when they snooze, and the children look like a bear's cub in their funny furry clothes. In the second stanza, and in this stanza it says the northern region experience a severe cold. जैसा कि Northland North area में you know guys very much they experience severe cold. It is a snow area. The reindeer is an animal. I hope you all know reindeer with the different horns. अलग अलग सींग होते हैं उसके different shapes में. So which is found in the polar region. So this animal reindeer found in the polar region. People tie the reindeer to sledges and then reindeer pulls the sledges. He added that the children look like young ones of the bear because they wear funny looking clothes made of fur, which is like a furry skin of a bear. Because of the cold, they used to wear all these things, this fur and all. So in the stanza third, they tell them a curious story. I don't believe this true, and yet you know me learn a lesson if I tell the tale to you. In line 1, they refers to the parents or the elders, and them refers to the children of the younger generation. The elders of the Northland region tells a strange and interesting story of the younger generation. The poet says that he doesn't think that the story is true, but if he tells to the story to the reader, maybe the reader could learn a lesson from it. The story gives an important message. Now come to the stanza 4. Once, when the good Saint Peter lived in the world below, and walked about it preaching just as he did, you know. So this story is about Saint Peter, Sant Peter, we can say in Hindi. When Saint Peter used to live in the world and went around giving religious lecture to the people, and just like all the saints do, then an incident or an incident, we can say incident happened. So इफ इनसे हिंदी में बोलूँगा तो मैं एक सेंट पीटर हुआ करते थे और वो क्या करते थे अपना प्रचार अपना रिलीजियस जो है वो प्रचार करते रहते थे जैसे बाकी दूसरे संत लोग करते हैं. तो एक घटना हुई. ही कम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज इन अ ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड वेयर अ लिटिल वुमन वॉज मेकिंग केक्स एंड बेकिंग देम ऑन द hearth. So here, when Peter was moving around the world, giving religious lecture to the people, he reached the door of a cottage where a small woman was making cakes. She was baking the cakes in the fireplace. Next stanza, stanza number 6. And being faint with fasting
for the day was almost done, he asked her from her store of cakes to give a single one. So जैसा कि आप लोगों को पता है कि सेंट पीटर घूम रहे थे, उन्होंने कुछ नहीं खाया था, अलग अलग जगह घूम रहे थे, उन्होंने कुछ नहीं खाया था, तो ही वॉज वेरी हंग्री एंड फीलिंग वेरी वीक. तो वो उस वुमेन के पास गए और उनसे मांगा, एक 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 केक मांगा. उसके पास जो बहुत सारे केक उसने जो बना के रखे थे, उसने एक उसमें से केक मांगा. Coming to the next para. So she made a very little cake, but as it a baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away. So जो woman थी वो very selfish थी, बहुत ज़्यादा selfish थी. She did not give the store cake from her store. Okay, instead she started making a very small cake for the Saint Peter. She did not want to share her things, but when she put the cake for baking, she looked at it and thought this cake was too big to be given to someone. So basically क्या हुआ, वो लेडी हम जैसा कि देख सकते हैं, लेडी जो थी वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश थी. उन्होंने क्या किया, अपने सामान देना नहीं चाहती थी और सेंट पीटर को बिल्कुल छोटा सा केक बना के उन्होंने रख दिया, बेकिंग के लिए रख दिया. लेकिन जब वो बेक होके आया तो वो बहुत बड़ा लग रहा था उनको. सो शी थॉट इतना बड़ा कौन देने की ज़रूरत नहीं है. देयरफॉर शी नीडेड अनदर and still a smaller one, but it looked like when she turned it over as large as the first one had done. The little woman thought that the cake was too big to be given away, as I mentioned earlier. So she started another baking cake. Okay, when she looked at that cake, she again felt कि वो तो पिछले वाले से भी बहुत बड़ा है. So she was not ready to give the ये वाला भी देने के लिए वो तैयार नहीं है. Then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat and baked it thin as a wafer. But she couldn't part with that. So this third time उन्होंने क्या किया, छोटे अमाउंट का आटा लिया, बिल्कुल छोटा सा अमाउंट का आटा लिया और उसको रोल करने लगा. डो यानी आटा. The poet says that she rolled and rolled to lay emphasis on the fact that she rolled the dough and made it very thin like a wafer and baked it. But she was so greedy that she couldn't give the thin piece of bread to the saint. मतलब इतनी ज़्यादा लालची बोल सकते हैं, ग्रीडी, कि वो अपना जो क्या बोलते हैं, जो एक ब्रेड पीस ऑफ ब्रेड है वो भी नहीं देना चाहती थी उस संत को. Next stanza. For she said, my cakes that seems too small when I eat of them myself are yet too large to give away. So she put them on the shelf. So the woman reason दिया कि जब वो केक खाती हैं, she felt that they were very small, but if she had to give them to someone, she felt they were too big to be given away. She put all the cakes on the shelf of her kitchen and like उसने बिल्कुल भी नहीं वो सेंट पीटर को नहीं दिया. Then 11th stanza. Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. So सेंट पीटर जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए, एंड बिकॉज रीज़न भी था उसका कि वो बहुत ज़्यादा भूखे भी थे, एंड ही वॉज फीलिंग वेरी वीक, एंड दिस सेल्फिश वुमन was not even ready to give him a small piece of cake. This behavior of greedy woman angered the saint. And he said, you are too selfish to dwell in for a human form, to have both food and shelter and fire to keep you warm. अब इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया सेंट पीटर को, तो उन्होंने क्या किया, उस वुमन को कर्स किया एंड सेड दैट यू आर वेरी सेल्फिश एंड यू डिड नॉट डिजर्व टू बी लाइक अ ह्यूमन बीइंग. यानी आप बिल्कुल भी इंसान बने रहने लायक तो आप हो ही नहीं, इतने ज़्यादा आप सेल्फिश हो. ही एडेड दैट गॉड गिव हर फूड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म. यानी भगवान ने आपको इतना सब कुछ दिया, रहने के लिए घर दिया है, खाने के लिए खाना दिया है, और आग भी दी है जिससे आप गर्म रहो, क्योंकि वहाँ पे ठंड हुआ करती थी. तो आप इतने ज़्यादा भगवान ने आपको सब कुछ दिया है, बट शी हैड बिकम सेल्फिश फॉर ऑल द रिसोर्सेज शी हैड. She did not want to share with them anybody. यानी वो किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहती थी. भगवान ने इतना सब कुछ उसको दिया है, लेकिन फिर भी वो एकदम से ग्रीडी बन के रह रही थी. Now you shall build as the birds do
and you shall get your scanty food by boring and boring and boring all the day in the hard dry wood. So Saint Peter cursed the woman that hence that she would become a bird. क्या बन जाएगी वो? इंसान से एक बर्ड बन जाएगी, बिकॉज शी डिड नॉट डिजर्व द ह्यूमन फॉर्म, क्योंकि वो ह्यूमन फॉर्म के बिल्कुल भी लायक नहीं है. शी she shall become a bird, and just like birds build their houses by boring into the wood and collect every little food by working hard the entire day. Similarly, she would also work hard in the dry wood all day and get little food and make a small place for what? To live. वो छोटा सा ही जगह बना पाएगी पूरा सब कुछ मेहनत करने के बाद ही, बिकॉज सेंट पीटर ने उनको कर्ज किया दैट शी विल बी इन अ फॉर्म ऑफ अ बर्ड. Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she changed to a bird. So क्या होता है, as soon as Saint Peter cursed this woman, she did not get a chance to speak of herself, because at that very moment she flew up to the roof through the chimney and flew out in the form of a bird. Saint Peter's curse had converted the woman into a bird. Next stanza. She had a scarlet cap on her head, and that was the left the same, but all the rest of her clothes were burned, black as coal in the flame. So when she was flying through the chimney, or when we say when the woman turned into a woman, at the time she was wearing a red color cap on her head. This cap was there on the bird's head also, that's the same woman head also, but the remaining clothes, it was burned and turned black in color, just like a coal. And every country schoolboy had seen her in the wood, where she lives in the tree till this very day, boring and boring for food. So the last stanza says, people who live in the countryside, इवन जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, जो बर्ड्स को देखने जाते हैं, उन्होंने इनको देखा है, ठीक है, इस बर्ड को देखा है. दे सी दैट दे स्टेज देयर फॉर ऑल डे एंड कीप्स ऑन डिगिंग द वुड विथ हर बीक टू कलेक्ट हर फूड. जैसा कि आप लोगों को पता है चिड़िया क्या करती है, अपने चोंच से दाना चुगती है अपना खाना, तो वैसे ही उस चिड़िया को भी इन्होंने, बहुत से लोगों ने, बच्चों ने देखा है. वेन एवर एनी चाइल्ड सीज दिस काइंड ऑफ बर्ड, देन हर एल्डर्स टेल हिम दिस स्टोरी. और जब भी कोई बच्चा मतलब इसको बर्ड्स को ऐसे देखता है, इस बर्ड को देखता है जो अपने स्कारलेट कैप को पहन के है करके, तो जो भी बड़े होते हैं उनको इस तरह से स्टोरी सुनाता है. दे से दैट द बर्ड यूज टू बी अ वुमन अर्लियर, और वो बोलते थे कि जो बर्ड है ये पहले एक वुमन हुआ करती थी. शी वॉज वेरी ग्रीडी एंड सो शी वॉज कर्स्ड बाय सेंट पीटर एंड टर्न इनटू अ bird. So they get teaching that they should not be greedy. So in this here, in this legend of the Northland, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, this poem narrates the legend of an old lady who angered Saint Peter because of her greed. So in this poem, और basically poem के अंदर ही एक छोटी सी स्टोरी भी है कि हमें कभी भी लालची नहीं बनना है किसी भी चीज़ के लिए. अगर हमारे पास कुछ चीज़ है, we have to share with others. So this is one of a good moral lesson for you guys. अगर आप क्या बोलते हैं, किसी गरीब को अगर 2 रोटी भी देते हो तो इट विल बी अ गुड ब्लेसिंग फॉर यू. बट आपके पास सब कुछ होते हुए भी अगर आप किसी को नहीं देते हो, अगर आप लालचीपन रखते हो अपने मन में, ग्रीडीनेस रखते हो कि नहीं ये तो मैं मेहनत से किया है मैंने, मैं मेरे पास ही रखूंगा. मान लो किसी के पास नहीं है, अगर आप उसको एक हेल्प कर भी दोगे, आप उसको एक दे भी दोगे, सो इट वुड बी अ गुड ब्लेसिंग फॉर यू. ओके, लाइक उस वुमेन ने उसको नहीं दिया था एंड द सेंट पीटर कर्स्ड हर, यानी उसको लेडी को, उसके पास इतना सब कुछ केक था लेकिन उसको होते हुए भी उन्होंने उसको नहीं दिया, तो इसीलिए क्या हुआ, वो लेडी क्या बन गई, एक बर्ड बन गई. इट्स अ स्टोरी बट वी आर नॉट श्योर वेदर इट इज ट्रू और नॉट. सो ग्रीडीनेस लीड्स टू दिस टाइप ऑफ things, as we can understood from this chapter. So never be a greedy person, always try to help others, always try to mingle with each other, and always respect each other. So that is all from our lesson, A Legend of the Northland. सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इस
इसमें पोएम में समझने में कोई दिक्कत आ रही है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो यू कैन कमेंट बिलो, और आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं. यू ऑल नो माई नंबर. सो दैट इज ऑल. थैंक यू एवरीवन. हैव अ गुड डे. टेक केयर.